Welcome back to Droanacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 16th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स कवर करेंगे. We're going to talk about the importance of Lumbini. Well, this particular article has been highlighted in today's The Hindu newspaper. आज हमने हमारी डेली करंट अफेयर वीडियो में भी बुद्ध पूर्णिमा की बात की है. And Prime Minister Narendra Modi is also visiting Lumbini, which is in Nepal. So we will understand the importance of Lumbini in our first article today. After that, there is an article which was featured in Indian Express, which is about Okinawa Islands. Well, there's a frustration in Okinawa Island. We will see what's the background of the entire issue, what's the history is, and what are the current dynamics related to Okinawa Island, where these islands are situated. And then lastly, the issue of pardoning power, president and governor. This is a lot in news, so we'll cover the pardoning power as well. So let's get started. So let's start with the importance of Lumbini first. So Lumbini is in news as Prime Minister of India, Narendra Modi, is going to visit Lumbini today. And Nepal, if we talk about Lumbini in Nepal, it is full of symbolism and substance. So we will understand what this visit symbolizes, what is the significance of this visit, what can India do at Lumbini, and what is the Buddhist center whose foundation Prime Minister Narendra Modi laid in Lumbini. आज हमने हमारे करंट अफेयर वीडियो में देखा कि लुम्बिनी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा. सो व्हाट विल दैट बी एंड किस तरह इंडिया एक बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप कर सकता है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आज आर्टिकल में कवर थे विद द टाइटल द इम्पोर्टेंस ऑफ लुम्बिनी. So let's get started with this. This entire topic is even important from a GS paper 2 point of view because this is about India and its neighborhood. So if we talk about the visit of Prime Minister Narendra Modi on the occasion of Buddha Purnima to Lumbini, Nepal, what does this visit symbolize? See, this visit is a combination of personal desire plus पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स. तो कहीं ना कहीं ये जो विज़िट है ये एक रिफ्लेक्शन देती है, एक मैसेज देती है ऑफ पीस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, द कंपैशन एंड नॉन वायलेंस. वेल, दीज आर द मैसेजेस विच आर प्रीच्ड बाय द बुद्धा, द मैसेज ऑफ पीस, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस. सो दिस विजिट symbolizes, it's a quite reflection of that as well. Visit is also political and strategic. See, it is an opportunity time for India to, to do a lot in this region, to be the regional leader. And during this visit, Prime Minister Narendra Modi is set to meet the Nepali counterpart, Sher Bahadur Deuba, for the bilateral talks. Prime Minister की participation, शिलान्यास सेरेमनी जो वहाँ पे हुई थी ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, दिस वाज इन द लुम्बिनीज मोनास्टिक जोन. दैट वाज आल्सो सिग्निफिकेंट, द पार्टिसिपेशन ऑफ नरेंद्र मोदी. इस शिलान्यास सेरेमनी में हिस्सा लेना ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है. हिज विजिट इज़ इंटेंडेड टू सेलिब्रेट एंड फर्दर डीपन द टाइज जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में है. दीज टाइज हैज़ बीन देयर थ्रू सेंचुरीज एंड वी हैव रिकॉर्डेड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरमिंगलिंग. दिस विजिट विल डीपन दिस. तो जो विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रही है टू लुम्बिनी नेपाल, दिस विजिट के जो क्या सिम्बलाइजेज हैं या फिर क्या इम्पोर्टेंट इसके पीछे रीजंस हैं और क्या एम्स हैं, वो यहाँ से आपको समझ में आया होगा. देन लुम्बिनी की अगर हम बात करें, हमने आज की हमारी करंट अफेयर वीडियो में भी लुम्बिनी को डिस्कस किया है. सो वी शुड नो द सिग्निफिकेंस ऑफ लुम्बिनी. ओके, सो लॉर्ड बुद्धा was said to be born in 623 BC and he was born in this sacred area of Lumbini.
याद रखिएगा. So Lumbini is actually, it's a तेराई प्लेन्स इन सदर्न नेपाल, एंड यहाँ पे हमारे पास लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ. एंड इवन द इंडियन एम्पेरर अशोका had erected one of its commemorative pillars there as well. And this, site is now being developed as Buddhist pilgrimage center, जहाँ पे जो भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं जो कि लॉर्ड बुद्धा के बर्थ के साथ एसोसिएटेड हैं, उनको वहाँ पे रखा जा रहा है to form a central feature of this place. And the complex structure which is present in this archaeological conservation area, this includes Shakya tank, जिसे शक्य टैंक कहा जाता है, द रिमेन्स ऑफ माया देवी टेम्पल जो कि कुछ 3rd century BC डेट करती है टू द प्रेजेंट सेंचुरी. देन देयर इज अ सैंडस्टोन अशोका पिलर विद अ पाली इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. याद रखिएगा, अशोका पिलर भी है वहाँ पे. एंड द एक्सकवेटेड रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट विहाराज, विहाराज आर द मोनेस्ट्रीज ऑफ बुद्धिस्ट, जो कि कुछ 3rd century BC और कुछ 5th century AD के बीच में को डेट करती हैं. There are remains of Buddhist stupas as well, the memorial shrines. They are also from the period of 3rd to 15th century AD. So both Lumbini and Mahabodhi temple, which are in Bodh Gaya, both of these are UNESCO's World Heritage sites. So Lumbini is also World Heritage site, and Mahabodhi temple in Bodh Gaya is also the UNESCO's World Heritage sites. Also, the first foreign monastery, in Lumbini, it was built by a Vietnamese monk, The Huon Dev. And India does not have a monastery in Lumbini. And जो यहाँ पे largest monastery है, that has been built by Chinese, who sponsor and support international conferences on Buddhism in Nepal, as well as the massive celebration on Buddhist festival such as Vesak as well. And in India is also, a home of some of the most sacred sites of Buddhism. We just discussed it in today's videos. मैंने आज की जो हमारे current affair की analysis था वहाँ पे with map we have located all of these places. So we know Bodh Gaya is in India, जहाँ पे Lord Buddha की enlightenment हुई है. बुद्धास का फर्स्ट सरमन सरनाथ में हुआ है. परिनिर्वाणा ये खुशीनगर में हुआ है. बुद्धा प्रीच्ड फॉर मेनी ईयर इन सारावस्ती. एंड देयर आर अदर इम्पॉर्टेंट साइट्स लाइक नालंदा एंड राजगीर. अगर आपने जो डेली करंट अफेयर वीडियो नहीं देखी है, डू वॉच इट. वहाँ पे हमने मैप में इन्हें लोकेट किया है और हर एक लोकेशन को डिटेल में कवर किया है. सो आफ्टर दिस कम्स द क्वेश्चन दैट व्हाट कैन इंडिया डू एट लुम्बिनी. सी, सबसे पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट रही है अभी नेपाल में, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टाइम टू रेमेडी दिस सिचुएशन एंड टू अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन मोनेस्ट्री इन नेपाल. अभी हमने देखा कि लुम्बिनी में इंडियन मोनेस्ट्री कोई नहीं है. सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टाइम फॉर इंडिया टू अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन मोनेस्ट्री देयर. नंबर 1. Secondly, India could assist Nepal in development of Lumbini because there are many international committee that has been set up by UN. Along with that, India should also assist in the development of Lumbini. And then comes Buddhist circuit. See, there is a need to develop a Buddhist circuit जहाँ पे seamless connectivity हो, जो मेजर पिलग्रिमेज साइट्स हैं इंडिया और नेपाल के बीच में, वहाँ पे कंफर्टेबल ट्रैवल हो सके. फॉर दैट वी नीड द बुद्धिस्ट सर्किट. तो इसकी डेवलपमेंट में भी इंडिया को हेल्प करना चाहिए. बोथ द कंट्रीज शुड वर्क टुगेदर. एंड देन दे शुड बी स्पीडी कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट. तो इससे क्या होगा, जो टूरिज़्म है और जो लोकल इकोनॉमी है उसे बूस्ट मिलेगा एंड ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा. इसके अलावा एक बड़ा टेक अवे ये भी है दैट इंडिया इज़ गोइंग टू lay the foundation of the India International Center for Buddhist Culture and Heritage. तो ये बुद्धिस्ट सेंटर जिसकी फाउंडेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ले डाउन की है लुम्बिनी में, व्हाट इज़ दिस, इसको भी समझते हैं. सो द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, ये जो लुम्बिनी का मोनेस्टिक जोन है वहाँ पे इसे सेटअप किया जाएगा. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस विल कॉस्ट अराउंड ₹1 billion.
and it will take around 3 years to complete. So center will also, construct, Indian government will also construct the International Buddhist Confederation IBC, New Delhi. तो जब ये complete होगा तो center will be the world class facility which will be welcoming the pilgrimage and tourists from all around the world to enjoy the essence of spiritual aspects of Buddhism. That is what the objective of this center is. It will be a modern building. यहाँ पे net zero compliant होगा in terms of energy, water and waste handling. And this will, this will have prayer halls, meditation centers, library, exhibition halls, cafeterias, offices and other amenities as well. Now next thing comes is what can India do to develop a Buddhist circuit? तो see, अब हम कह रहे हैं कि जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं इनके बीच में सीमलेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो इसमें इंडिया का रोल क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो देयर इज़ अ नीड टू अडॉप्ट अ मास्टर प्लान एंड टू डेवलप बोध गया एज लाइक लुम्बिनी. जिस तरह लुम्बिनी नेपाल में एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है in terms of Buddhism, similarly we need to develop Bodh Gaya on the same lines. So we need a master plan for Bodh Gaya. And there should be a high level coordination committee जिसके अंदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए और एज वेल एज जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी होने चाहिए ताकि कोई भी जो प्रॉब्लम्स आए उनको हम रिजॉल्व कर सकें. तो जो एंटायर बुद्धिस्ट सर्किट है बेसिकली जहाँ पे लुम्बिनी, बोध गया, सरनाथ, सारनाथ, कुशीनगर, इनको इस सर्किट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना चाहिए. दिस एंटायर बुद्धिस्ट सर्किट, Lumbini, Bodh Gaya, Sarnath, Kushinagar. And India can also take the initiative to organize an international conference on the development of this Buddhist circuit. तो इससे एक sense of participation और एक ownership मिलेगी to the Buddhist countries as well. India can also establish an international museum of Buddhist tradition in Bodh Gaya, and India can invite all the Buddhist countries to participate in this as well. Bodh Gaya में भी एक international museum बनाया जाए, बोध गया को भी लुम्बिनी के लाइन्स पे ही डेवलप किया जाए. So this is the importance of Lumbini and the visit of Prime Minister Narendra Modi to Lumbini on the occasion of Buddha Purnima. So with this, I would like to wish all of you a very happy Buddha Purnima as well. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अगैन जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अ बर्निंग इंटरनेशनल इशू. So what is the issue? It's about Okinawa Islands. As today, Okinawa marks 50 years since US handover. तो बेसिकली ये जापानीज़ आइलैंड चेन में है. देयर इज़ अ जापानीज़ आइलैंड चेन ऑफ ओकिनावा एंड इट हैज़ मार्क्ड 50th एनिवर्सरी ऑन संडे ऑफ द एंड ऑफ यूएस ऑक्यूपेशन एंड इट्स रिटर्न टू जापान. जब यूएस की ऑक्यूपेशन यूएस ने इसे हैंड ओवर कर दिया था बैक टू जापान. सो विद द कॉल फॉर मोर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फ्यूअर यूएस बेसिस despite of growing worries over its proximity to an increasingly assertive China. So there are some frustrations which are going in Okinawa Island, but it is in news because 50 years complete हो गए हैं since United States has handovered Okinawa Islands to Japan. So let's see what is this entire issue. So the frustration is still there in the Okinawa even after the 50 years of its reversion to Japan after the US rule. तो सबसे पहले देखते हैं दैट व्हाट इज़ ओकिनावा. तो जैसे कि अभी हमने कहा और आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख भी सकते हैं दैट ओकिनावा इज़ एन आइलैंड ग्रुप एंड इट इज़ एन ग्रुप इन ओकिनावाज प्रीफेक्चर ऑफ जापान. तो जापान के साउथ में आप देखें तो आपको ओकिनावा यहाँ पे नज़र आएगा. सो दिस इज़ ओकिनावा, द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ओवर हियर. सो दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ रुकोयू आइलैंड ग्रुप. ठीक है, ये रुकोयू आइलैंड ग्रुप का पार्ट है. एंड इन द प्रीफेक्चर इट इज़ सिमिलर, it is in Japan, it is similar to states in USA and provinces in Canada as well. And Japan is divided into 47 prefectures with rank immediately below the national government.
Now, if we talk about the history behind the Okinawa Islands, so this is, goes back to World War II. तो वर्ल्ड वॉर टू में यूनाइटेड नेशंस वांटेड टू पुश मेनलैंड जापान एंड फॉर दैट दे लैंडेड ऑन ओकिनावाज मेन आइलैंड on April 1st, 1945. So, there was an intense battle of 3 months of Okinawa, and it sacrificed, by the Japan's Imperial Army to defend its mainland. And after that, island remained under the United States occupation for 27 years until it was returned back to Japan on May 15th, 1972. तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स जापान के साथ जब लड़ाई हो रही थी उस टाइम पे दे लैंडेड ऑन दिस ओकिनावा आइलैंड एंड तब से लेकर 27 ईयर्स तक दिस आइलैंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन ऑन 15th May 1972 it was returned to Japan. So after this comes the question that why was Okinawa occupied? तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री को जो ओकिनावा की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली टू मेंटेन इट्स ट्रूप टू डिटर रशिया एंड कम्युनिज्म इन दैट रीजन. रशिया को बैलेंस आउट करने के लिए और कम्युनिज्म जो है वहाँ पे बैलेंस आउट करने के लिए ओकिनावा इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड. So, while ending the 7 years of US occupation in Japan, 27 years of US occupation in Japan, USA separated Okinawa and some other southwestern remote islands from the rest of the Japan under the San Francisco Treaty in 1952. And US ने जो ओकिनावा आइलैंड की जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन की थी, this helped Japan to address its worry about Russia and concentrate on the post-war economic surge, lowering its defense spending. क्योंकि ओकिनावा आइलैंड में यूएस था तो इससे जापान को रशिया से उतना खतरा नहीं था. तो पोस्ट वॉर इकोनॉमिक ग्रोथ जो जापान को देखने के लिए मिली है उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि रशिया को बैलेंस आउट करने के लिए ओकिनावा में अब यूएसए था तो जापान को ज़्यादा डिफेंसिव एक्सपेंडिचर उस टाइम पे नहीं करना पड़ा एंड अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को लोअर करते हुए दे मोर फोकस्ड ऑन दी पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी. So ultimately the question comes, how did this affect the Okinawas? तो जो लोकल ओकिनावा पॉपुलेशन थी वहाँ पे उन्हें इससे क्या इफ़ेक्ट हुआ? सी अंडर द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ऑक्यूपेशन जो ओकिनावन गवर्नमेंट थी दे हैड अ वेरी लिटिल डिसीजन मेकिंग पावर एंड द डिमांड्स फॉर द रिवर्जन टू जापान रोज इन लेट 1950s. तो क्योंकि बहुत कम डिसीजन पावर थी तो 1950s आते एंड होते होते जो डिमांड थी कि जापान से रिवर्ट करना चाहिए, रिवर्जन होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा रोज़ हुए ऑल अक्रॉस दी ओकिनावा एंड ओवर द कॉन्फिस्केशन ऑफ लोकल लैंड फॉर यूएस बेसिस. जब वहाँ पे लोकल लैंड के ऊपर यूएस बेसिस बनने लगे तब ये जो डिमांड थी ये काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो गई. And then many Okinawans, they demanded for tax reform, wage increase and better social welfare system to correct the disparity between the Okinawa and rest of the Japan. लेकिन जो रिवर्जन था ये काफ़ी डिले हुआ. जो यूएस मिलिट्री प्रेजेंस थी इससे वहाँ पे जो डेवलपमेंट फंड्स थे वो काफ़ी मिसमैनेज हुए और इससे ओकिनावा आइलैंड की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट इन सब के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा. ऑल ऑफ दिस हैम्पर्ड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द आइलैंड. तो यहाँ से आप समझ पाएंगे जो हेडिंग है फ्रस्ट्रेशन इन ओकिनावा आइलैंड, ये फ्रस्ट्रेशन क्या है, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द ओकिनावाज. So the main problem is that first of all the island is not free of military bases. Military bases हैं वहाँ पे and under the bilateral security pact of US troops and military facilities in Japan, they are still sanctioned in Okinawa. तो military bases हैं और majority जो US troops हैं they are still sanctioned there. ओकिनावा का जो average household income है it is the lowest. एंड अगर हम जापान की जो 47 प्रीफेक्चर्स है उसकी कंपैरिजन में देखें तो हाउस होल्ड इनकम एवरेज कम है और अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है. सो इफ़ द लैंड विच इज़ टेकन बाय द यूएस मिलिट्री इज़ रिटर्न बैक टू द ओकिनावा फॉर यूज़, तो इससे
हमारे पास 3 times more income generate हो सकती है for Okinawa than what the island is making right now from the bases. Now because of these US bases, Okinawa noise face करता है, noise pollution, aircraft accidents, crime which are related to the American troops. एंड इसे लेकर जो जापान की सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है टू मूव दी फ्यूटिनमा एयर स्टेशन विद इन ओकिनावा इंस्टेड ऑफ मूविंग इट समवेयर एल्स विच वॉज डिमांडेड बाय द ओकिनावास, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है. वहाँ पे फ्यूटिनामा एयरफोर्स स्टेशन सेटअप किया जा रहा है. देन देर इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू रनवे एट द हेनोको बे विच इज़ ऑफ द ओकिनावाज ईस्टर्न कोस्ट. इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन है ओकिनावा में. 72% ऑपोजिशन इज़ देयर. रेफरेंडम हुआ था एंड मेनली यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और जो इसका कॉस्ट है उसे देखते हुए सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन की गई है. एंड ऑल्सो देर इज़ रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ जापानीज मिसाइल डिफेंस हेयर एज वेल. Because of the ambiguous capability of the Okinawa's outer island, which even includes Ishigaki, Miyako, Yonaguni, तो ये एक, क्योंकि इसके बिल्कुल पास में ताइवान है, चाइना है, रशिया है, तो ये जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट बन जाता है जस्ट लाइक ताइवान. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेन प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय दी ओकिनावाज पॉपुलेशन देयर. अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है ना, इससे क्या हो गया है कि ओकिनावा और जापानीज़ मेनलैंड के बीच में एक रिजेंटमेंट क्रिएट हो गया है. एंड देयर आर कंप्लेंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड क्लेम्स दैट ओकिनावंस आर फोर्स्ड टू सर्व एन एक्सपेंडेबल रोल टू प्रोटेक्ट द मेनलैंड ऑफ जापान. एंड नाउ सम पीपल हैव स्टार्टेड कॉलिंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम जापान एज वेल. So therefore it's a very burning issue. You should know where is Okinawa Islands. Location आपको clear होनी चाहिए. And जो background है, why there's frustration going on, what are the implications of it, this should be very clear. Lastly, our next article is important from polity point of view, GS paper 2. It is about the pardoning power, both constitutional and statutory provisions which are related to the pardoning issue. So again, this is the news. Why? Because Supreme Court has reserved the orders on the question whether a governor can refer the state government's advice for granting remission to life convicts to the president for a decision or not. तो इसे लेकर हमने आज के हमारे करंट अफेयर वीडियो में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिमिशन का जो पॉलिसी डिसीजन है, इट शुड बी इन द स्टेट वेयर क्राइम हैपेंड. It should not be where the case was concluded or case was transferred. It should be given to the state where the crime has happened. तो यहाँ से pardoning power important हो जाता है. What is pardoning power? See, commonly pardoning power मतलब to have mercy or it is a clemency power. And India में ये pardoning power दो authorities के पास है, which is president and governor. सबसे पहले president की अगर हम बात करें तो basically Article 72 of our constitution, it empowers the president to grant pardon to person who have been tried or convicted of any offence in all the cases. This includes punishment or sentence against union law, even by the court martial, or if the sentence is sentence of death. And जो president की pardoning power है, it is independent of judiciary as well. It is an executive power. तो चाहे यूनियन लॉ के अगेंस्ट किसी पर्सन को पनिशमेंट मिली है, सेंटेंस मिला है, कोर्ट मार्शल के थ्रू मिला है जिसे मिलिट्री कोर्ट भी कहा जाता है, या फिर सेंटेंस ऑफ डेथ है, इन सभी केसेस के अंदर जो मर्सी है या फिर जो क्लेमेंसी की जो पावर है, दैट इज़ गिवन टू प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72. देन कम्स गवर्नर. आर्टिकल 161 of the constitution, it empowers the governor of the state to grant pardon, reprieves, respites, remissions of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of a convicted person under any offence against state law. अब यहाँ पे क्या important हो जाता है, यहाँ पे state law आ जाता है. हमने काफ़ी डिटेल में इसे हमारे कल के डेली करंट एनालिसिस में डिस्कस किया था, ऑल दी पावर्स. तो एक चीज़ और देखिए,
कि गवर्नर की और प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है ये डिफरेंट है। प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल के केसेस में, मिलिट्री कोर्ट्स के डिसीजन के केस में पार्डन कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कोर्ट मार्शल के केसेस में पार्डन नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस, बट गवर्नमेंट कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस। Even if a state law prescribes the death sentence, the power to grant it lies with president, not with governor. गवर्नर सिर्फ सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है द केसेस ऑफ डेथ सेंटेंस, लेकिन पूरी तरीके से पार्डन नहीं कर सकता, माफ़ नहीं कर सकता। पार्डनिंग की पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। इसके अलावा ये सेलेमेंसी पावर जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं अंडर CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसे भी देख लेते हैं। तो CRPC बेसिकली प्रोवाइड फॉर रिमिशन ऑफ द प्रिजन सेंटेंसेस। यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 432 आता है, जहाँ पे जो अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट हैं दे मे सस्पेंड, रेमिट अ सेंटेंस इन अ होल और इन पार्ट, और विद और विदाउट कंडीशंस टू रिलीज द प्रिजनर बिफोर दे कंप्लीट देयर प्रिजन टर्म्स। एंड देन वी हैव सेक्शन 433, इसके अंदर जो सेंटेंस है उसे कम्यूट किया जा सकता है टू द लेसर वन बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। Then we also have section 435, which says that the prisoner had been sentenced in a case investigated by any agency under a central act, like suppose कोई CBI है, तो स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑर्डर इन द रिलीज ओनली इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर किसी सेंट्रल एक्ट के वजह से वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हुई है तो ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट रिलीज या पार्डन तभी कर सकता है, सेलेमेंसी पावर तभी आ सकती है। फर्स्ट दे हैव टू कंसल्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। In case of death sentences, central government may also concurrently exercise the same power as the state government does, जिसमें कि वो remit या suspend कर सकते हैं the punishment of the sentence. तो the remission power which is given through CRPC, it is different from the constitutional power. तो CRPC में जो government है, the government acts itself, लेकिन जो आर्टिकल 72 है या फिर आर्टिकल 161 है, यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट एडवाइस के बेसिस पे प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं दे कैन सस्पेंड और रेमिट और कम्यूट द सेंटेंसेस। सो इन एनी केस, इन ईदर केस, द डिसीजन इज ऑफ गवर्नमेंट, बट सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड इट क्लियर दैट बोथ ऑफ दीज आर टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर. Also, Supreme Court has upheld the validity of Section 433A of CRPC, in which a person is imprisoned for a life term cannot be released unless he had completed 14 years. So, remission power, be it through CRPC or be it through the constitutional, both of them in both of the cases the government is acting itself, but in the constitutional one the government is acting through by giving the advice to the president or the governor to suspend or to remit or commute the sentences, whereas in CRPC the government is acting by itself only. So these are the major differences if we talk about the remission under CRPC and the remission under the constitutional power. After this comes the issue of Rajiv Gandhi's assassination case. Recently we were discussing that as well, that is also in news. So basically in September 2018, state government invoked article 161 of the constitution so that the remainder of the life term of the 7 convicts be remitted and to release them. So in this case, government referred the question to president. So this has raised a constitutional question on whether governor can make such a reference to president or not. The other issue that arises is whether the primacy accorded to the centre's opinion under CRPC can be extended even to the remission that is granted to governor under article 161. तो क्या आर्टिकल 161 का जो हमारा प्रोविज़न है और जो CRPC के थ्रू जो सेंटर का जो ओपिनियन है, क्या ये आपस में क्या ये एक्सटेंड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ? सो दीज वर दी मेजर इश्यूज जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को रेज किया था, स्पेशली विद द राजीव गांधी असैसिनेशन केस. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Till then, thank you.